Hello everyone, जय जगन्नाथ। वेलकम टू बायोलॉजी थेरापी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जमती कि तुम मैंने देखि सारथियो तुम मैंने थंबनेल रो जानि सारथियो कि हमें कोन डिस्कशन करिया ए वीडियो रे केमिस्ट्री रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिस डिस्कशन करिवा जोटा कि तुम मानकर काली एग्जाम अछि केमिस्ट्री एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट रहबो सेही पॉइंट ऑफ व्यू रो जदी देखिबो तो किछिटा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहां भी बाकी रहि अछि ताको हमें आज डिस्कशन करिया केमिस्ट्री रो जो माने सीएचएससी बोर्ड एग्जाम दोछ से आना पई बहुत इंपोर्टेंट रहबे वीडियो को एंड जाय समझते देखियो आउट जिनस जदि तुम मैंने टेलीग्राम रे ना हो ताले टेलीग्राम चैनल होची तुम मानर कैपिटल तुम सर्च करियो बायोलॉजी थेरापी आसीजियो अदरवाइज तुम माने ई वीडियो डिस्क्रिप्शन को पळेली गोटे लिंक तुम मानक मिल जिवो से लिंक रे क्लिक कले टेलीग्राम चैनल रो तुम मानकर पेज को नहीं जाओ पूरा तुम जॉइन करी फ्री ऑफ कॉस्ट सब पीडीएफ पाखे टेलीग्राम रे सब पीडीएफ तुम माने पाई परियो आ जहां भी क्लासेस होची से क्लासेस रो लिंक सब पाई जिवो और जदि किसी पर्सनल क्वेरी अछि मते व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज करि परियो व्हाट्सएप नंबर होची तुम मानकर 8598062969 ए नंबर रे मते मेसेज करले तुम माने मो तुम मानक रिप्लाई करि परियो अदरवाइज तुम माने कमेंट सेक्शन रे भी जणे परियो वीडियो टा केमति लागुची नेक्स्ट वीडियो कोन हम डिस्कशन करबे सो ये थिला तुम मानकर फर्स्ट जिंस तो डिस्कशन करिया तापर जे तुम माने हम चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट करछो निश्चित भाबरे चैनल टा को सब्सक्राइब करनियो आ वीडियो टा को भी लाइक करनियो और निज संग मान पाखु शेयर करनियो तो चलो स्टार्ट करिया देरी न करी टाइम वेस्ट न करी डिस्कशन करिया फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन से देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution will have the lowest freezing point कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution will have the lowest freezing point ऑप्शन में कौन देछि पोटेशियम सल्फेट सेकंड देछि सोडियम क्लोराइड तापर देछि क्लोराइड सॉरी तापर देछि यूरिया तापर देछि ग्लूकोज तो तुम जदि देखिबो ताहले 0.1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन रे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कहा था पोटेशियम सल्फेट तो था क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच एक्वस सॉल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट कोटा मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट अछि ऑप्शन में देखि देखो 0.01 m NaCl 0.005 m C2H5OH तापर 0.005 m MgL2 तापर देखि 0.005 m MgSO4 तो ये पाखे 0.01 मोलार NaCl हो जाई त मानकर मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट आसी नेक्स्ट क्वेश्चन को जियो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज तापर देछि ऑप्शन देखो से बुझाची हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश ताहले तुम जदि देखिबो फर्स्ट ऑप्शन देछि कोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द कांस्टेंट रिएक्टेंट तापर देछि हाफ ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट तापर देछि सेम फॉर ऑल रिएक्शन तापर डी रे देछि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जदि देखिबो ए पाखे कोन हो तुम मानकर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हे जो ए पाखे तुम मानकर आंसर टा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंसीडर द 2a plus b products यदि ए प्रोडक्ट्स बाहर when concentration of b alone was doubled the half life did not change कौन कहला the half life did not change when the cone of a when a cone of a alone was doubled the rate increased by two times दुई थर rate increase हो the unit of the rate constant for the reaction is dash ताले कौन आसीबो तारो unit of the rate constant for the reaction से पचाची पाखरे ताले कौन आसीबो देखो ऑप्शन में कौन अछि मोल पर लीटर पर सेकंड तापर पर सेकंड ओनली देछि तापर अछि लीटर पर मोल पर सेकंड तापर देछि नो यूनिट ताले पाखरे यूनिट कोन आसीबो लीटर पर मोल पर सेकंड आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फोर हाफ रिएक्शन 1 to IV 1 रु 4 जाए आर सोन बिलो तो मानो चारटा शो करछि हैला देखो 2Cl प्रोडक्ट बाहरियो कोन Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन ए पाखरे 4OH O2 + 2H2 + 2 इलेक्ट्रॉन ए पाखरे देखो Na+ E- जोटा कि Na+ आसु जे पाखरे हैला और जे 2H+ + 2 = H2 क्लियर एति अछि which two of these reaction are most likely to occur when the concentrated brine is electrolyzed brine को यदि इलेक्ट्रोलाइज कराला concentrated brine को इलेक्ट्रोलाइज करले को दिटा को आसी मोस्ट लाइकली कोन आसी ए बगरे से पचाची तो ऑप्शन में कोन देछि 1 and 3 1 and 4 तापर देछि कोन 2 and 3 2 and 4
तो आसीजो कोन तुम मानकर 1 एंड 3 आसीजो ए रिएक्शन आउ ए रिएक्शन आसीजो तुम देखो जो माने वीडियो को लाइक करनो निश्चित भाव लाइक करनियो और निज सांग मान पाख भी शेयर करनियो हला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम इलेक्ट्रोड्स आर E naught K plus by K equals to minus 2.9 volt E naught Z2n plus Zn minus sorry equals to minus 0.76 volt E naught H plus by H2 equals to 0.00 volt out the E naught Cu2 plus by Cu equals to plus 0.34 volt the strongest oxidant is कोटा स्ट्रॉन्गेस्ट आसीओ ए पाखरे से पचारची आमे जानचे पाखरे कॉपर टा आसीओ Cu2+ टा आसीओ नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक आयन से पचारची गोटे डायमैग्नेटिक आयन कोन बोले ए पाखरे पचारची एटॉमिक नंबर ऑफ Sc V Mn Cur 21 23 25 एंड 29 रेस्पेक्टिवली तुम मानको दे देची ताले तुम मानकर कोन आसीओ ए पाखरे तुमरो कम पचारची डायमैग्नेटिक आयन टा पचारची ताले Sc3+ टा आसीओ डायमैग्नेटिक आयन टा आसीओ क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following properties shown that iron is a transition element first देछि कोन it forms well known double salt second देछि it forms stable complex salt ताहले एटा होला तमनकर stable कोन stable complex salt बने क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन देछि which of the following complex or the complex ion will show geometric isomerism geometric isomerism कोटा शो करे देखो फर्स्ट ऑप्शन देखियो PtNH3 रो होल टू Cl2 ताहले तो फर्स्ट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन से देखो which of the following complex species is not expected to exhibit optical isomerism कोटा optical isomerism को कोन करबेनी एग्जिट करबेनी से पचारछि तो एबे देखो CO ब्रैकेट रे En फिर ब्रैकेट रे NH3 रो होल टू Cl2 रो होल ब्रैकेट प्लस तापर देछि बी देखो CO En रो होल क्यूब आ होल ब्रैकेट रो 3 प्लस तापर देखो C रे देखो CO ब्रैकेट रे En रो 2 Cl2 होल रो प्लस देछि आ ओइ पाखे देखो लास्ट देछि CO NH3 होल 3 Cl3 आ तार चार्ज किछि देइ तो लास्ट ऑप्शन हे अछि करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन अछि तम माने करे पाखरे which alkyl halide is preferentially hydrolyzed by SN1 mechanism which alkyl halide is preferentially hydrolyzed by SN1 mechanism कोटा को माने alkyl halide को preferentially hydrolyzed करा जिवो SN1 mechanism थ्रू रे फर्स्ट ऑप्शन देखिया कोन अछि तम मानकर फर्स्ट ऑप्शन अछि देखो CH3Cl सेकंड अछि CH3CH2Cl थर्ड अछि कोन CH3 CH2 CH2Cl और फोर्थ अछि कोन त मनकर CH3 रो होल क्यूब C.Cl अछि ताले करेक्ट ऑप्शन हे जो डी तो मन नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज के जिवा which of the following compound will undergo racemination when solution of KOH hydrolyzed कोन देछि पाखरे देखो ए पाखरे देछि तम मानको किछिटा तम मानकर देछि हला बेंजीन ऊपर CH2Cl देछि तापर देखो ए पाखरे देछि CH2 सॉरी CH3 CH2 CH2Cl तापर देछि पाखरे CH3CH तापर देछि CH2Cl आ ए पाखरे देछि तम मानकर कोन C ऊपर CH3 दी साइड माने गोटे हाइड्रोजन आ गोटे क्लोरीन आ गोटे तम मानको CH2H C2H5 अछि तेबारे कोटा हबो से पचरछि तम मानको केते नंबर इटा एक डबल आई कथा से पचारछि तो ए पाखे जदि देखियो तम मानकर कोन देछि ऑप्शन रे कि कोन देछि देखो 1 एंड 2 तापर देछि 2 एंड 4 तापर देछि 3 एंड 4 तापर देछि ओनली 4 ताहले ओनली 4 करेक्ट ऑप्शन हे जो ऑप्शन डी हे जो करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट नंबर देखो x ट्रिपल ए देछि देखो which of the following is least soluble in water least soluble water रे कोटा आसीबो देखो ए पाखरे कोन आसीबो least soluble जदि देखियो ताहले C7H5OH टा least soluble हो जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा when n-propyl methyl ether is treated with cold HI
এটা কালি আমি ডিस्कशन কৰিଥିଲି যদি জানিছো তাহলে কোন হিজো এই পাখরে কোন হিজো जोड़ा तुम मानकर मिथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल अल्कोहल फॉर्म हो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ वाटर कोटा वाटर संगे रिएक्ट करबल से पाखे तुम मानकू पचारछि कोन अछि CHCl3 Cl3 CCHO ताले एटा हिजो करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा which of the following acid is present in citrus fruit citrus fruit रे को एसिड थाए एते इजी क्वेश्चन को आडो आसे साइट्रिक एसिड थाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following is basic basic कोटाल से पाखरे पचारछि तुम मानकू हला बेसिक कोटा हिजो तुम मानकर देखो ए पाखरे CH3NH2 होला बेसिक फॉर्म रे अछि एटा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नंबर होची which of the following compound will give dye test कोटा दो aniline दो जानि जो समझते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो XIX which differs from the rest कोटा डिफरेंट करियो ग्लूकोज माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज ए सब देछि तमनको भितरे कोटा तमनको डिफर करियो ए सब कोन अछि ग्लूकोज अछि सबटु सिंपलेस्ट फॉर्म रे अछि तो ग्लूकोज आसीबो नेक्स्ट अछि देखो तमनकर मोनोमरटा होछि नेक्स्ट अछि डबल एक्स कोन अछि देखो which of the following is a कीटोहेक्सोज कोटा कीटोहेक्सोज कहला कीटोहेक्सोज माने छोटा तो फ्रुक्टोज कथाई पाखरे आसी जाइछि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट नंबर कोन अछि which of the following is not the which of the following is not the characteristics of ideal solution रो कोटा characteristic कोन सॉल्यूशन नो सॉरी which of the following is a not characteristic of ideal solution कि ideal solution रो कोटा टे characteristics नो बोली बाटे तुम मानू देछि ऑप्शन देखो h mx m by x equal to 0 v mx equal to 0 देछि तापर a and bb interaction ab interaction ताले सी हे जाउछि तुम मानू करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a maxima or minima obtained in the temperature composition curve of a mixture of two liquids indicates कोटा indicates करिवल से बाके पचारछि and azotrophs mixture तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाउछि azotrophs mixture टा हो जाउछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which one of the following statement for the order of reaction is not correct कोटा order of reaction पई करेक्ट न देखै बाके कोन अछि त मानकर order of reaction can be more than 3 एटा करेक्ट न क्लियर सीधा सीधा हम आंसर डिस्कशन के टाइम और शो नहले लेट हो जिवो तो जो माने भी जाय वीडियो को लाइक करनो निश्चित भाबे वीडियो को लाइक करनियो निज संग मानको पाकु शेयर करनियो आ जदी से सब्सक्राइब करने जाय ताले निश्चित भाबे हम चैनल को सब्सक्राइब करनियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 by 2N2O5 4NO2 plus O2 follows first order kinetics hence कोन आसीबे पाखरे तम मानकर आसीबो तम मानकर t half life dot a not आसीबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो v नंबर कोन अछि तम मानकर ए पाखे देखो इन galvanic cell the salt bridge is used to कोन करे यूज करा हुई काहेकिना to reduce liquid junction potential in the cell ताकू liquid junction potential को reduce करे को cell रे यूज करा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए पाखरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो vi कि which of the following reaction is correct for Kohler-Schwarz law कोट आसीबे बाके तम माने जानिचो कोन आसीयो प्लस इक्वल्स टू आसी हला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा वीडियो बोलै देखो कोन अछि व्हाट इज द शेप एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ परमैग्नेट आयन नो कोन टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो v which of the following statements related to lanthanoids is incorrect which of the following statement related to lanthanoids is incorrect कोन देखि देखिबा यूरोपियन shows plus 2 oxidation state तापर देखि the basicity decreases as the ionic radius decreases from pr to lu तापर देखि c रे कोन देखि त मानकर all the lanthanoids are much more reactive than the aluminum तापर देखि Ce+4 solution are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis ताले सी टा तम मानकर भूल जाइछि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ix देखो द कोऑर्डिनेशन
कौन देछि the coordination number of the central ion may be obtained from कोट obtain करा जाय परिबो को ऑप्शन अछि देखो the number of coordination bonds formed with the surrounding atoms एको obtain करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देछि पाखे देखो which of the following will not show geometric isomerism कोटा शो करूनी पाखे पचाछि ताले देखो कोन देछि पाखे देखो फास्ट देछि अच्छा एटा ऑप्शन तुम मानकर जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करनी देखो CONH3 रो होल 5 NO2 तापर Cl2 बाहर क्लियर तापर xi को जीवा xi रे कोन सी देखो कि फर्स्ट देखो which of the following will be least reactive in nucleophilic substitution रे कोट least reactive बोली पाखे तुम मानक पचारछि ताले कोट आसीबो CH2 CHCl आसीबो क्लियर तापर देखो एटा नेक्स्ट नंबर which is not present in Grignard reagents रे कोटा प्रेजेंट नहीं बोली पाखे तुम मानक पचारिछि तो देखियो कोन कार्बोक्सिलिक रेडियल रिप्रेजेंट बाय COOH ताले एटा फर्स्ट टाइम करेक्ट आंसर नेक्स्ट x ट्रिपल आई को देखो which is not an alcohol कोटा नो C2 CH CH2OH गोटे अल्कोहल CH2OH CH2OH गोटे अल्कोहल तापर C6H5 CH2OH गोटे अल्कोहल C6H5OH गोटे अल्कोहल नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following is least soluble in water ताले देखियो C10H21OH least soluble water नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following reagents will react readily with both aldehydes and ketone कोट आसीबो ए पाखरे फेलिंग सॉल्यूशन बा फेलिंग रिएजेंट्स आसीबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following do you consider to be suitable for obtaining acetone CH3COCH3 कोट आसीबो ए पाखरे पचारची कोन आसीबो तम मानकर देखो ए पाखरे कोन छी कि passing CH3CH और bond OH CH2 over heated copper इटा जो तम मानकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन XV को जीवा which of the following has highest boiling point जो तुम जदि देखियो बाकरे ताले CH3OH रासी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी which of the following amines cannot be acetylated using acetyl chloride कोटा छिवा ट्राइमिथाइल अमीन टा हे परियो नेक्स्ट जीवा XIX को XX कोन छी देखो which of the following statement is not true about glucose about कोटा ट्रू नॉल से पचारछि it is an aldohexose तापर देछि on heating with HI it forms N-hexane तापर देछि कोन तमर को it is present in pyranose form तापर देछि कोन देछि it gives 2,4-DNP test दिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो which of the following is non reducing sugar कोटा सुक्रोज नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी देखो which has highest boiling point under 1 atm pressure 1 atmospheric pressure रे कोटा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अछि बोली से पास पचारछि ताले कोन आसीबो 0.1 MBSL आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the pressure under which liquid and its vapor can coexist in equilibrium is known as कोन आसीबो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोली ताकू कहै नेक्स्ट क्वेश्चन देखो T half of C4 isotope is 5770 years. Time after which 70% of isotope left is केते रहिबो केते वर्ष रहिबो 2740 रहिबो नेक्स्ट देखो according to collision theory only a fraction of collision are effective which have enough energy to form products ताले ऑप्शन डी हो जायछि करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखो V नंबर which is the correct representation of Arnest equation to correct representation जदि देखिबो ए 3 को 3 पूरा पूरी ठीक अछि ताले all of these हे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा VI देखो कोन अछि
The correct cell to represent the following reaction: Zn plus 2Ag plus product with Zn2 plus 2Ag. ताले पाखे कौन आसी तुम Zn Zn2 plus Ag आसी तुम correct representation. Next देखो V double A D block elements form colored iron because D block elements टा colored iron form करे काहे कि ना they absorb same energy for DD transition. Clear? Next question. The general electronic configuration of transition elements is कोड आसीबो तम मानकर एटा आसीबो n-1 होल d रो कोन पावर रे 1 10 ns 0 to 2 क्लियर. नेक्स्ट देखो ix which of the following is the most stable complex जदी कहबो ताले तम मानकर कोन fe c2h4 रो होल 3 आउ होल पावर 3 माइनस. तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन which statement is not correct. देखो फर्स्ट अछि कोन FeCO whole 5 reacts with Br2 ठीक अछि. तापर carbonyl complexes are usually formed with transition metals ठीक अछि. All transition metals are non monometallic carbonyl ना एटा नो ठीक अछि. ताले ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो xi which of the following does not react with benzene in presence of anhydrous AlCl3. AlCl3 जो कौन कहला which of the following does not react with the benzene in presence of anhydrous AlCl3. ताले कोटा आसीजो तम मानकर आंसर कोटा आसीजो तम मानकर आंसर होची कि C6H5Cl फर्स्ट है होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो X डबल ए देखो which of the following is most reactive towards the nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction को जदि देखियो ताले बाकी स्ट्रक्चर टी देखिले तम मानकर ए डी टा होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो X ट्रिपल ए when Na reacts with glycerin it forms जदि Na सोडियम तो मानो सॉरी Na टा जदि रिएक्शन करिवो का संगे सोडियम टा रिएक्शन करिवो का संगे ग्लिसरीन संगे ताले कोन फॉर्म करिवो से फॉर्म करियो तम मानकर डाई सोडियम सॉल्ट फॉर्म करियो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो तम मानकर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन when primary alcohol is oxidized with Cl2 it gives कोन दबो से तम मानकर CH3 CHO दबो CH3 CH दबो फर्स्ट ऑप्शन ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following is a weak electrolyte को टाइप है तम मानकर एसिटिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन RCOH प्रोडक्ट बाहर RCH O2 शायद एटा बोले हला. This mode of reduction of an acid to alcohol can be affected by केमते affected हे परियो एटा देखियो LIE by H4. नेक्स्ट रूप जीवा नेक्स्ट रोटे देखो फर्स्ट कौन सी देखियो which one of the following pairs will form an ideal solution कोटा उठे पेयर जोटे फॉर्म करबो त माने कर n hexane and n heptane. नेक्स्ट क्वेश्चन a substance will be deliquescent if its vapor pressure is कोन अछि त माने कर vapor pressure जदी lesser than that of water vapor in the air. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statements regarding molecularity is wrong. कौन दीजिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कौन दीजिए तुम्हारा देखो it is the number of reactants molecules colliding in a single step of chemical reaction. सेकेंडली कौन दीजिए देखो तुम माने करो it refers to individual step of reaction. थर्ड दीजिए कौन it may be whole number of fraction के नो तो ऑप्शन सी हो जाएगा सी वाला करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखो आईवी रे कौन सी देखो the first order reaction takes 30 minutes for 50% completion. The value of rate of constant k would be केते आसीबे पाखरे आसीबो तम मानर केते आसीबो तम मानकर 2.31 into 10 to the minus 3 per minute. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी नंबर which of the following expression is correct. को एक्सप्रेशन टा करेक्ट अछि बोली बात पछाची g not equals to minus n f e not cell तो फर्स्ट ही करेक्ट अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जे देखो कोन अछि फर्स्ट अछि देखो 3 farad of electricity are passed through the molten Al2O3 aqueous solution of CuSO4
and the molten allicin taken in 3 different electrolytic cells, the amount of Al, Cu and Na deposited at the cathodes will be in the ratio को ratio रे तमनकर aluminum copper और तमनकर सोडियम को दिया बोली से बकरे पचारची जोड़ा तमनकर कौन से 1 मोल 1.5 मोल और 3 मोल दिया नेक्स्ट आछला तमनकर देखो V डबल आई देखिए कौन अछि which property of transition metal कौन कहले which property of transition metal enables them to behave as catalyst तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रे जदी सेमथि सेमान कोन ट्रांजिशन मेटल्स को एनेबल करियो बिहेव करियो कैटलिस्ट हिसाब रे जेति नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट को स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि आयरन बिलोंग्स टू 3D ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल सेकंड अछि आयरन बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक को असेन तो इनकरेक्ट अछि बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आईएक्स कोन अछि देखो व्हिच वन इज एन organometallic compound कोटा उटे organometallic compound बोली बकरे से पचारची ताले देख जदी देखियो मिथाइल कार्डियम क्लोराइड उटे organometallic compound नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन अछि which one is the most likely structure of CrCl2.6H2 if 1/3 of total chlorine of this compound is precipitated by adding AgNO3 to its aqueous solution ताले कोन आसीबो देखै बकरे अछि CrCl2 होल रो H2O4 डॉट Cl डॉट 2H2 आसीबो तमनकर ऑप्शन सी करेक्ट हिजो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिया xi नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिया स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज यूजुअली added to CHCl3 bottle because it retards the anesthetic property of CHCl3 no next which it retards the oxidation of CHCl3 to phosgene তাহলে এটা ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে কোন it converts any phosgenes formed to harmless ethyl carbonate এইটা ঠিক আছে তাহলে অপশন ডি হে যেত মানে করেক্ট অপশন जोटा কোন both B and C হে नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा x डबल आई कौन सी देखो तुम माने करो कि which reagents is useful in increasing the carbon chain of an alkyl halide जोटा पचारि तुम माने करो कार्बन चेन टा इंक्रीज करिया पहिले को reagents को यूज करा जाय बोली बकरे से पचारछि जदि देखियो ताहले KCN को यूज करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो माने भी जे वीडियो को लाइक करनो वीडियो देखुजो निश्चित भाबरे वीडियो को लाइक करो निज सांगवान पाकु भी शेयर करो क्लियर समस्त जेमति पाई पारि हाउ ए जे भी हम चैनल को सब्सक्राइब करनो थाले सब्सक्राइब करने आपण जिंस जदी पीडीएफ पाइबो चाहो छो पीडीएफ पई त माने टेलीग्राम चैनल जॉइन करि परियो बायोलॉजी थेरेपी त माने टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक माने डिस्क्रिप्शन रे भी तारो लिंक त माने पाइबो क्लियर नेक्स्ट जीवा x ट्रिपल ए को जीवा x ट्रिपल ए देखियो कोन छी when isopropyl alcohol vapors are passed over heated copper it gives कोन दबा एसीटोन दबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो तुम मानर कोन छी what would be the best starting material for preparation of torch butyl alcohol using Grignard's reagents तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हिजो एटा हला नेक्स्ट देखो which of the following is dimetric form रे कोटा अछि तुम माने करो dimetric form रे अछि तुम माने करो फॉर्मिक एसिड नेक्स्ट देखो XVI हला XVI देखो कोन अछि तुम माने करो कि XVI कोन अछि हां which of the following is oxidized to the corresponding carbonyl compound को ऑक्सीडाइज करे कोटा उटे corresponding फॉर्मूला अछि propan 2 बोली नेक्स्ट क्वेश्चन XB को देखो कोन अछि which of the following has higher boiling point कोटा हिजो त माने करो CH3 CH2 OH नेक्स्ट क्वेश्चन XB a primary amine can be distinguished from secondary and tertiary amines केमति तमे डिस्टिंग्विश करि परिबो कोन अछि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन तो फर्स्ट वन ठीक अछि फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो XIX which of the following order base phosphate and sugar are arranged in the nucleotide of DNA केमति आसीयो त माने करो phosphate base sugar आसीयो ए ऑर्डर रे ऑर्गेनाइज करा जेते तो हमें लास्ट क्वेश्चन को भी पहुंच गेलनी जो माने भी जे वीडियो को लाइक करना निश्चित भारे लाइक करो निजे संगमान पाक वीडियो लाइक करले ही से अन पाक पहुंचियो तुम जदी शेयर करू न भी ताहले भी से पहुंचियो सेति में लाइक करे मोस्ट इंपोर्टेंट आ जदी पाछो शेयर भी कर क्लियर लास्ट क्वेश्चन देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डिफिशिएंसी
causes rickets कोटा करे तमे जानछो विटामिन डी रू करे सो ये थला तम मन पई मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू किछिटा आई होप समस्त को हेल्पफुल रहइबो पुणी थरे देखा हबो नेक्स्ट एग्जाम तम मनकर बायोलॉजी एग्जाम पूर्व बहुत कुछ डिस्कशन करियो सो आज पे एतिकी थैंक यू ऑल हैव ए गुड डे